Hello everyone. Myself Shalini, Associate Product Manager at Immeureka Animal Health Private Limited. I extend a warm welcome to all our listeners in this podcast series. Through this platform, we consistently provide poultry related knowledge by engaging with poultry experts to share their practical information as well as field oriented experiences that will support poultry farmers in their day to day operations. Today, in this podcast, I extend a warm welcome to Dr. Nagesh Sonale, who is the Techno-Commercial Manager at Immeureka Animal Health Private Limited. Welcome, Doctor. Kindly explain more about yourself. Thank you so much, Shalini, for inviting me in this knowledge series of America Animal Health. First, I would like to introduce about myself. Myself, Dr. Nagesh Sonale, and I am associated with this industry from last 8 years with experience in research, academic, and field experiences also. Through these field experiences, I could able to gain a strong knowledge about poultry health management, disease diagnosis, feed formulations, and my always motto to give solutions to the farmers, which will be a profitable business. Thank you, Doctor. It was a wonderful introduction of yourself. Before entering the topic, I'll let you know what topic of discussion is for today. The topic of discussion will be poultry challenges related, which is loose dropping, its causes and solutions. So this is one of the most day-to-day problem which is poultry farmer is facing. So I want you to deeply discuss on this topic. But before getting into loose dropping, I want you to explain more about the normal dropping, what normal dropping is, and I want you to continue to the loose dropping. Okay. Thank you, Shalini, for giving me the wonderful topic. And first of all, I would like to tell what is a basic of this dropping, means what is a normal or fresh dropping. So the dropping is like a key indicator. It can be used as a tool to identify what is happening in the digestive tract of the bird. So through that we can understand how our digestion is happening. So basically the fecal, or we can tell as a droppings, it is consisted of three different distinct part. One is like brownish, greenish brownish part will be, which is the major portion will be there. Second is like uric cap will be there, and third is like little moisture will be there. So this is like a basic structure of feces or droppings. Right, doctor. So by this we can understand that seeing the physical appearance of the droppings, poultry farmer can identify if there is any disease occurrence in their farm, or like if there is about of any financial losses are yet to come. So based on this physical appearance, poultry farmers can look into the feces and they can firstly understand like there is something yet to come, right? Yes, Shalini. From the droppings, the farmer can easily understand what is happening in the digest, as I already told. So if the digestive tract is not proper, of if anything digestive disturbances is there in the digestive tract, so that time what will happen, the entire production performance get hampered, such as like FCR. So FCR may increase by 5 to 10 percentage also. And if the dropping is consistently increasing, so that time chances of increasing of ammonia will be there. It will be more than 25 ppm. So what will happen in this case? Respiratory issue also increases. So these consequences will leads to financial losses in the farm. So if you see the FCR is increasing and the ammonia also increasing, so there may be the chances of bird may suffer from any disease or any performance reduction. So it will ultimately affect to the productivity of the bird. Okay, doctor. So we have discussed about the normal dropping. So what is loose dropping and how will it appear? Yeah, as already we have discussed about what is a normal dropping. With that context, I can able to tell you. So normal dropping will have a three distinct part, as I have told. So in that three distinct part, so whatever the firm brownish part will be there, it is like 60 to 70 percentage will be there, and second part is like uric cap, and third is like moisture, it will be like 10 to 15%. This is a structure of normal feces. When it turns to the loose dropping,
So this structure get diluted, or Okay. the percentage of water will increases. So we can consider it as a loose dropping or diarrhea also. So when this problem will increase, so there will be so many different reasons for this also. So what will happen, the color of droppings changes, so based on the different causes. So this is a major difference between the loose dropping and normal droppings. Okay. So in like normal for a poultry farmer, it will be like normal fishes will have the structure, but in loose dropping, the water content will be more and the structure will be completely diluted, right? Yes. Okay, doctor. So we have deeply discussed about the preventive causes. तो apart from the preventive measures which I can take, अगर अभी मेरे farm पे loose dropping आ गया तो as a treatmental care, what should I do to control this loose dropping? वेरी गुड क्वेश्चन वैशाली। जब लूज ड्रॉपिंग फार्म पे आती है तो उस टाइम हमें दो कैटेगरीज में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन्फेक्शियस कॉजेस है और दूसरा है कि नॉन। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फेक्शियस कॉजेस। जब इन्फेक्शियस कॉजेस आते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली बैक्टीरियल कॉजेस है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स बहुत सारे वेटनेरियन प्रेफर करते हैं। यू कैन गो विथ दैट। Then second cause is like viral. So viral associated loose dropping you can reduce via giving some supplements. Uh, so that can give some reduce the pressure of the loose dropping. दूसरी एक चीज़ ये है कि कॉक्सिडियोसिस। तो कॉक्सिडियोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको कॉक्सिडियोस्टैट ऐड करना पड़ेगा फीड में। बहुत बार क्या होता है कि कुछ फार्मर कॉक्सिडियोस्टैट ऐड करने के बाद में भी उनको लूज़ ड्रॉपिंग, पर्टिकुलरली ब्लडी ड्रॉपिंग देखने के चांसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉक्सिडियोस्टैट का एक रोटेशनल प्लान जिसे शटल प्रोग्राम कहा जाता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। ये हो गए इन्फेक्शियस कॉज को रिड्यूस करने के लिए। अभी बात करेंगे कि नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ होंगे। तो कुछ सपोर्टिव है, कुछ चीज़ें तो आप वो ऐड कर सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है प्रोबायोटिक्स की कुछ फैमिलीज़, जैसे कि लैक्टोबैसिलस है, बाइफिडोबैक्टीरियम है। तो ये सारी प्रोबायोटिक्स आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ-साथ आप कुछ हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसका भी कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आपके गट की लाइनिंग में, गट का जो हेल्थ मेंटेन करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। राइट डॉक्टर। आपने अच्छे से एड्रेस किया कि लाइक हर्ब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग लूज ड्रॉपिंग, राइट? सो आई वांट लाइक व्हाट काइंड ऑफ हर्ब्स आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग दिस लूज ड्रॉपिंग एंड वेदर इट कैन बी टेकन थ्रू फीड और थ्रू वाटर, लाइक कैन यू प्लीज लेट मी अंडरस्टैंड Uh, दिस? yes, Shalini. These whatever the remedies I'm telling, that can be given either by feed or by water. So there are some herbs are also there are number of herbs, but particularly I will name some herbs which is like katuja, bale, pomegranate. This will help to reduce reduce the loose dropping, and it will help to reduce the hypersecretion and maintaining the water balance in that gut, and Okay. tightening the gut junctions, what are the villi length and all. For that this will be useful. All right, doctor. So we have detailedly discussed about like normal dropping, loose dropping, its causes, like how to prevent it, and if the loose dropping occurs, like how to treat it. So almost we have discussed a lot of points. Now we are yet to conclude the discussion. I want you to give some of the suggestions, like what farmer can do in their day-to-day operations, because I believe like each and every like small step which they are taking in the farm, that will lead to a big difference. So, what kind of suggestion you would like to give to farmers in their day-to-day routine, sir? Yes, Shalini. So whenever this loose dropping is there, so most of time farmer can do some certain thing, such as like मैं जैसे बताना चाहता हूँ कि फार्म में जस्ट एवरी डे वन वॉक करना चाहिए। जैसे कि ब्रॉयलर फार्म है तो डेली एक वॉक करने के 5 मिनट का वॉक करने के बाद आपको पता चलेगा कि ड्रॉपिंग किस प्रकार के हैं, क्या नहीं। तो वो आपको एनालाइज हो जाएगा कि हमारा बर्ड कौन से सिचुएशंस में। डेली करोगे तो इट्स बेटर, नहीं तो एक दिन गैप रख के भी करोगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी एक चीज़ है कि वाटर की जो क्वालिटी है, तो सडनली अगर चेंज हो गया तो आप वाटर की क्वालिटी के जैसे मैंने बताया, टीडीएस की मात्रा अगर ज़्यादा है तो कुछ वो भी आप देख सकते हैं। नहीं तो कभी-कभी साल्ट का कंटेंट भी कभी ज़्यादा हो गया तो तब भी लूज़ ड्रॉपिंग की संभावना ज़्यादा हो सकती है। तो आप देखना कि आपकी फीड में साल्ट ज़्यादा जा रहा है या फिर वाटर से थ्रू जा रहा है।
और एक दूसरी एक चीज़ फार्मर देख सकता है कि माइकोटॉक्सिन कुछ कुछ डायरिया या कुछ लूज ड्रॉपिंग्स माइकोटॉक्सिन से ही एसोसिएट, देयर आर नंबर ऑफ माइकोटॉक्सिन्स, तो उससे ही एसोसिएटेड हो सकती है। उस पे भी आप देख सकते हैं और आपके न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ आप देख सकते हो कि मैंने जो एक बात बताई थी स्ट्रेस के बारे में, तो हीट स्ट्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो तो वो बैलेंस जा रहा है नहीं जा रहा है, ये चीज़ें आप देख सकते हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे पोल्ट्री के ऑपरेशंस में रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग जैसे रखोगे तो आपको प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है उसका एनालिसिस होता है। क्योंकि जैसे कि लूज ड्रॉपिंग आती है तो वो सीधा मैंने जैसे बताया कि इट विल अफेक्ट टू द एफसीआर आल्सो एज वेल एज द एग प्रोडक्शंस आल्सो। सो फार्मर कैन सी दीज ऑल द थिंग्स, और इसमें कुछ दिक्कतें दिखी कि सडनली 2 दिन से 3 दिन से कंटिन्यूस कुछ चेंजेस दिखे, तो फार्मर कैन कंसल्ट देयर रिस्पेक्टिव वेटनरियंस, देयर रिस्पेक्टिव न्यूट्रिशनिस्ट। So these things farmer can use for day-to-day operations in their farm on their farm. Okay, doctor. So we had a detailed discussion, and now we are nearing the end of the discussion. So, doctor, before we are wrapping up this session, I want you to give some bullet points to the farmers. That will be the hint to the farmers, like what they have to look into the loose dropping so that they can prevent it. ओके, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले फार्मर ने देखना चाहिए, शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग इन द फार्म। लूज ड्रॉपिंग है तो फिर लूज ड्रॉपिंग है तो फिर क्या कॉजेस है, वो पहले उसने आइडेंटिफाई करना है। ये पहला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि लूज ड्रॉपिंग है तो फिर उसके कुछ मैनेजमेंट करने के बाद हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कुछ मैनेजमेंटल स्ट्रैटेजीज जैसे हमने डिस्कस किया वो आप फॉलो कर सकते। उसके बाद अगर रिड्यूस होता है तो बहुत बढ़िया। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कुछ पैथोजेनिक रिलेटेड कुछ लूज़ ड्रॉपिंग है, तो वो अगर करना है तो फिर आप आपके कंसल्टेंट या वेटरनरियन को एक बार कंसल्ट कर सकते हो और उसके बाद में वो जो बताएँगे उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक बात ये है कि बहुत बार लूज़ ड्रॉपिंग ये एसोसिएट होता है प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया कि 5 टू 10% एफसीआर इंक्रीज़ होता है, और इसका एक महत्वपूर्ण इफ़ेक्ट आपके डर्टी एग्स पे भी होता है। अगर लूज़ ड्रॉपिंग होगी तो फिर डर्टी एग्स के चांसेस भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले। तो ये फार्मर को सीधा फाइनेंशियल लॉसेस पे का तरफ लेके जाता है। तो अगर इस पे अगर थोड़ा-सा ध्यान दे सकोगे, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक फार्मर उनका जो कुछ भी लूज़ ड्रॉपिंग से एसोसिएटेड जो लॉसेस है वो रिकवर कर पाएगा। ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंटली अगर फार्मर अगर करेगा तो काफ़ी मददगार साबित होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डे टू डे रूटीन जो मॉनिटरिंग है वो अगर करेंगे तब जाके आपको फार्मर को पता तब जाके फार्मर को पता चलेगा कि क्या चल रहा है, और तभी वो वेटरनरी को कंसल्ट करेगा, और तभी जाके आपके लॉसेस कम होने में आपको फ़ायदा होगा। Thank you so much, Dr. Nagesh, for sharing all your poultry insights and your expertise regarding this poultry loose dropping, its causes and solutions. And thank you so much to all our listeners for joining us today. Thank you so much, Shalini, for giving me platform to give my insight in Immeureka knowledge series. Thank you so much.